Hey everyone, welcome back to the session. My name is Utkarsh Sharma and I'm a psychology mentor at Study Capital. So we are continuing with our series of MCQs which are important for the exam, and the purpose of MCQ is to give you some 2-3 new topics to study and आपको एक idea लग जाए that where your preparation is going on, so that आपको एक dimensional idea रहे कि आपको किस तरह के topics पे focus करना है and which topic you have to skip or you can skip. चलिए. So, as you know, my MSc Psychology Vijeta batch is going live, and it is a MCQ booster series in which you will be getting 30 days, or I'll say the 30 plus hour of MCQ, in which we'll be solving 1500 plus MCQs which are like moderate to tough level. You're gonna be learning so many different न्यू टॉपिक्स जो कि आप जनरली प्रिपेयर करते टाइम बुक्स में या कहीं भी आपसे स्किप हो जाते हैं, एंड समटाइम्स यू सी दोज क्वेश्चंस एज अ बम्बो क्वेश्चंस कि ये टॉपिक कहाँ से आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं था, राइट. यू विल सी सम क्वेश्चन ऑफ इमोशन एंड यू विल सी कि इमोशन का ये टॉपिक कहाँ से आ गया, राइट. बिकॉज यूजली वॉट वी डू, हम लोग इमोशंस के 3-4 थ्योरीज ही पढ़ के जाते हैं, देन दे विल आस्क यू सम न्यू कंसेप्ट, right? So in this batch you will be getting 1500 plus MCQs with the answer keys, then सारे के सारे mock test का access आपको मिलेगा. Along with this you will get the research methodology in statistics class complete classes का lecture access आपको मिलेगा, and along with this सारे के सारे notes, PPTs, many other PDF files, हमारे weekly test जो हुए थे पूरे foundation batch के, हर एक चीज़ का access आपको इस batch के अंदर मिलने वाला है. Alright, so our classes are going live today even also. हमारी शाम को इंटेलिजेंस की क्लास होगी. We'll be solving hundreds and hundreds of questions just on intelligence topic. So today's topic will be based on clinical psychology. So clinical psychology में specifically therapies वाला part हमने deal कर लिया था. Now we'll deal with the disorders. अब disorders के लिए आपको केवल 2 चीज़ें याद रखनी होती हैं. You don't have to study the criteria of the disorder. Generally वो criteria से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. What I mean by generally, आज तक उन्होंने पूछा नहीं कभी. So you never know कब पूछ लें, but generally last 13-14 years they've never asked in any university except in some which are specifically for the clinical psychology part. Other than those, they don't usually ask the criteria basis question. They will always ask on the symptoms basis. Now what the problem is, symptoms generally there are 12 to 13 symptoms for every disorder, right? So there are a lot of tricks, there are a lot of keywords to catch कि इस डिसऑर्डर से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सो यू कैन ओनली नो दीज टाइप्स ऑफ ट्रिक जब आपको बहुत सारे पेपर्स का एनालाइज करने का एक्सपीरियंस हो. यानी कि आपको क्या करना है, यू हैव टू एनालाइज ऑल द पेपर्स यू हैव, CVT प्रीवियस ईयर, DU प्रीवियस ईयर, BHU प्रीवियस ईयर. यू हैव टू एनालाइज ऑल द पेपर्स वाइल सॉल्विंग देम. ऑफ कोर्स यानी कि खाली अलग से एनालाइज कर रहे हो, सॉल्व करते टाइम उनका एनालाइज भी करते रहो, एंड जस्ट लुक फॉर द पैटर्न. Look for the pattern that what kind of questions they ask, what type of disorders they usually ask, है ना. हर डिसऑर्डर से क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ ही डिसऑर्डर्स होते हैं इनसे क्वेश्चन आता है, एंड वी वेस्ट आवर टाइम स्टडिंग एवरी डिसऑर्डर. सम पीपल एक्चुअली स्टडी होल DSM, है ना, जो MPhil में पढ़ने की चीज़ है वो आप लोग प्रिपरेशन में पढ़ने लगते हो. सो नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. क्लियर? चलो, सो वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? बताइए, स्किज़ोफ्रेनिया का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या होगा? Okay, correct. It is delusions. Alright. So schizophrenia is a spectrum disorder. Earlier it was used to be divided in some more categories, but now it is a complete spectrum disorder, and there are 3 main symptoms. One of them is delusion, other 2 are hallucinations and disorganized speech. ये 3 symptom होते हैं आपके schizophrenia के, which are very prominent, है ना. चलो, next question. The hallmark symptom of OCD is. सो OCD का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? करेक्ट, दैट इज repeated intrusive thoughts. Intrusive means that you don't actually want to think about those thoughts, but they are coming back to back. This is what intrusive is, है ना. intrusion हो रहा है, right? You don't want them to think, but constantly you are thinking about something. लॉक किया कि नहीं, हैंड वॉश किया कि नहीं, राइट, गैस स्टॉप ऑन था, ऑफ किया कि नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दीज आर लाइक रिपीटेड इंट्रूसिव थॉट्स. OCD is based on 2 key symptoms, compulsions and what is that is compulsions and obsessions. So obsessions are basically in mind, psychological thing. Compulsions are basically the urge to do the behavior. Clear? Check. In MDD, major depressive disorder, which of the following is commonly observed? ऑलराइट, माई पर्पस इज टू गिव यू हिंट, है ना. ऑब्वियसली हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं सॉल्व कर सकते बिकॉज इट विल टेक लाइक हेल लॉट ऑफ टाइम,
है ना. सो माई पर्पज इज टू गिव यू द आइडिया सो दैट अगर आप प्रिपरेशन लाइक सेल्फ से कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग, यू कैन हैव एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे आते हैं. क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस ओनली, है ना. एग्जैक्टली ये भी हो सकते हैं बट क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस एंड सम मच डिटेल. कुछ डिटेल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपसे वो स्पेसिफिक की सिम्टम पूछते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, दैट व्हाट इज द की सिम्टम फॉर डाउन सिंड्रोम, है ना. सो डाउन सिंड्रोम का की सिम्टम होता है दैट दे हैव आलमंड शेप्ड आइज. सो दे विल जस्ट आस्क यू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर हैज आलमंड शेप्ड आइज, है ना. इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर, व्हाट लैंग्वेज दे यूज, है ना. आलमंड शेप्ड आइज, अब इसको कौन ही याद रखेगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, है ना. तो इस तरह के आपको एक्सपीरियंस बेसिस पे पैटर्न्स पता होने चाहिए वाइल अटेंडिंग द क्वेश्चंस. क्लियर. सो एमटीडी का क्या होगा आंसर, करेक्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज. दिस इज द मेजर वन ऑफ द की सिम्टम फॉर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ऑल्सो नोन एज डिप्रेशन, जो आप क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हो. देन विच डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन. बताइए क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट, इट इज bipolar disorder. Now there is a lot of confusion between bipolar types. Bipolar 1 क्या होता है, bipolar 2 क्या होता है, what is cyclothymia, what is dysthymia. So I am telling you these names, you have to study this thing. आपको इन सब का differences पता होने चाहिए. What is the difference between bipolar 1 and bipolar 2, which is more severe, in which hospitalization is required. What is the difference between cyclothymia and dysthymia, कहाँ पे hypomania होगा, कहाँ पे proper mania होगा. You need to be very pinpointed with these aspects because questions are being asked from this format. Clear? Sure. A person who feels persistent fear of being judged by others is likely to have. क्या होगा इसका आंसर, वेरी गुड, वंडरफुल. Person who feels persistent fear of being judged by other people is likely to have. बताइए क्या होगा इसका आंसर, वेरी गुड, सम पीपल आर गिविंग द राइट आंसर. इज इट ए और इज इट बी, क्योंकि सी और डी तो नहीं हो सकता, राइट. सी और डी तो नहीं होगा, पैनिक डिसऑर्डर या पीटीएसडी, दिस इज नॉट लाइक दैट. कंफ्यूजन इज बिटवीन इज इट सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और अगोराफोबिया. व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, बी ए. व्हाट इज द आंसर, समासिंग ए समासिंग बी, क्या होगा इसका आंसर बताइए. ए बी. See, agoraphobia is basically fear of being into public places. ठीक है, agoraphobia is like fear of being into public places, but being judged by others is basically social anxiety disorder. Clear? तो minute से difference होता है. agoraphobia is basically like एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आई एम टेलिंग यू दैट लैंग्वेज, बिकॉज एग्जाम में जनरली दे यूज अ लैंग्वेज विच इज मे नॉट और मे बी रिलेटेड टू योर बुकिश लैंग्वेज. सो आई एम टेलिंग द डिफरेंस विच दे हैव आस्क्ड इन द एग्जाम. सो agoraphobia is basically the fear of being into public places. This is agoraphobia, being into social situations, fear of being into social situations. Social anxiety disorder is basically what, which is asking the question. So it is option number B. Clear? चलो. PTSD disorder. Sorry. Which of the following is not a symptom of PTSD? So PTSD का symptom इनमें से क्या नहीं होता है, क्या आंसर होगा बताइए. PTSD का symptom इसमें से क्या नहीं होता है, करेक्ट, इट इज एलिवेटेड सेल्फ स्टीम. दिस इज अ सिम्टम ऑफ मेनिया. ठीक है, बाकी इंट्रूसिव मेमोरीज, अवॉइडेंस बिहेवियर, पर्सन विल ट्राई टू अवॉइड द ट्रिगर्स, है ना. कल क्लब में क्लास पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था विजेता बैच में, राइट. सो पीपल विल अवॉइड द बिहेवियर्स, अवॉइड द ट्रिगर्स. हाइपर विजिलेंस बहुत होता है. एलिवेटेड सेल्फ एस्टीम इज नॉट अ पार्ट ऑफ PTSD, इट इज अ पार्ट ऑफ मेनिया डिसऑर्डर. चलिए, what is the primary characteristic of GAD? GAD is also known as free floating anxiety. ठीक है, GAD से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, it is important for the exam. बताइए 7 का C. ओके, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GAD 7 का C हो सकता है. और ओके, समासिंग C. हाँ, चलो फाइनली सही आंसर दे रहे. दिस इज A actually. Excessive worry about the multiple things. It's like free floating anxiety. You don't feel like you are having anxiety attack due to only one specific trigger. You feel like you are having anxiety for all the things around you.
right? This is excessive worrying about multiple things. This is GAD, right? It is not impulsivity. Impulsivity is not related to GAD. It is more related towards mania. Clear? Chalo. Irrational fear of specific object or situations is termed as very easy बच्चों वाला question. PTSD का key symptom is basically that nightmares, then flashbacks, then tremors, then suffocation feeling, then constantly trying to avoid the triggers. ये सारे PTSD के key symptoms होते हैं, and there are some more. So question number 8 is phobia. So what is the difference between phobia and fear actually? Fear is rational, fear is genuine, right? Phobia is irrational, genuine नहीं होता है, थोड़ा सा irrational होता है, illogical होता है, right? A person who experiences sudden episodes of intense fear and physical symptoms like sweating and heart palpitations is likely having. बताइए क्या होगा? Question number 9. What should be the answer? Correct. It is panic disorder. Correct. It is पैनिक डिसऑर्डर. स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हो सकता, ADHD भी मे बी सब लोग करें बट नहीं, ADHD भी नहीं है, ऑटिज्म तो बिल्कुल नहीं है. सो एलिमिनेशन इज बेसिकली पैनिक डिसऑर्डर. देन which of the following disorder is characterized by repetitive involuntary movements or sound? This is a good question. Let's see who can answer this thing. Question number 10 is a good question. बताइए question number 10. क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10? बताइए. ओके, आई कैन सी सम कंफ्यूजन. क्या होगा, ए और बी, और शुड वी से सी? ए बी सी. डी तो नहीं होगा, यू मस्ट बी श्योर. डी तो नहीं हो सकता, राइट? व्हाट इज इट देन? टूरेट्स और ओसीडी. अब इसमें लोग कंफ्यूज कहाँ होंगे? दे विल सी द वर्ड्स रिपीटेटिव मूवमेंट्स साउंड एंड दे विल टिक ओसीडी. नो, it is Tourette's syndrome. When you perform repetitive behavior, repetitive sounds or any movement, this is basically Tourette's, and these things are involuntary. You are not doing it on your will. This is involuntary. This is like Tourette's syndrome, classic Tourette's syndrome or tics syndrome. Clear? So it is option number A. It's not OCD. Nowhere it is mentioning that obsession and compulsion. ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, right? It is simply repetitive behavior. So हर repetitive behavior OCD नहीं होता है. Clear? चल. Which symptom is not typically seen in ASD, autism spectrum disorder? बताइए क्या होगा इसका आंसर? Which of the following symptom is not seen in ASD? What is the answer? बताइए बताइए. ASD में कौन सा सिम्टम जनरली नहीं होता है? जनरली आई एम सेइंग सी. ओके, करेक्ट. इट इज सी, दैट इज hallucinations. जनरली hallucinations नहीं देखा जाता. इन सम रेयर केसेस वी हैव सीन दिस, बट जनरली hallucinations आर एब्सेंट इन ASD. क्लियर? चलो, वेरी गुड. Which disorder is associated with periods of extreme energy, talkativeness and reduced need for sleep? बताइए. Correct. Okay, correct. That is mania. You have extreme energy, excessive talking nature and reduced need of sleep. You don't feel like you are sleepy. This is basically mania. Classic symptom of mania. Clear? डिप्रेशन का उल्टा कर दो, somewhat, not exactly उल्टा, but if you just reverse the symptom of depression, you will get the mania symptoms. DID, dissociative identity disorder, is also known as. Correct. DID का दूसरा नाम क्या होता है? Multiple personality disorder or split personality disorder. Earlier it was used to known as split personality disorder or multiple personality disorder. In the film Bhool Bhulaiya Part 1, original वाली, right? The Vidya Balan in that scene, she has been diagnosed with MPD or DID in that movie, है ना, जो पूरा घोस्ट वाला एंगल दिखाते हैं. Later on, Akshay Kumar, the psychologist, she like got diagnosed with
स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, है ना, मॉन्जली का. चलो, which of these is a negative symptom of schizophrenia? This is a very important question. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं. सो यू नो, schizophrenia में there are two types of symptom, positive and negative, and positive and negative do not actually mean good and bad, है ना. Positive means if any behavior is more than normal, and negative means if any behavior is less than normal. So which of the following you feel like it is less than normal? Correct, it is flat affect, है ना. Your expressions will be dead. You will appear very cold to the people. You will have no facial expressions. You will appear very flat. This is known as flat affect. Then, which disorder is commonly seen in children and involves difficulty maintaining attention? क्या होगा इसका आंसर, भाई बताइए. Which of the following disorder is commonly seen in children and involves difficulty maintaining attentions? क्या होगा इसका आंसर? Correct, it is ADHD. Clear? Because as the name suggests, attention deficit hyperactivity disorder. Also, for those people who are thinking some strategy video, I'll be bringing the study video very soon. And just for the nutshell, you can just start solving MCQs, है ना. So just take a target. आपके पास लगभग एक महीना बचा है, ठीक है. And just take a pledge that you have to solve at least 5,000 MCQs. Right? If you can solve at least 5,000 MCQs in this 1 month along with analysis, ये नहीं कि solve कर लिया खाली. You have to analyze your MCQs, that what are the points you are committing mistakes at, है ना. क्यों, if like you know this topic, why is it like कि आपको इसका आंसर नहीं figure out कर पा रहे हो, है ना. तो ये सारी जो analysis होती है ये आपको करते रहनी है. And if with the analysis you are able to solve 5,000 MCQs, then my friend you are good to go for the exam. Clear? It is not guaranteed कि आपके 280 प्लस आएंगे, but this will ensure a very high probability कि आपके 270 to 60 प्लस आराम से आ जाएंगे if you can have the quality or the ability to remember 5,000 MCQs. Not exactly remember, यानी कि रटा होना चाहिए. You have to remember the concept, the idea. Clear? चलो. A person with anorexia nervosa typically exhibits. So anorexia nervosa is a eating disorder, right? क्या होगा इसका आंसर? Correct. It is severe weight loss. Clear? Generally females में इसकी prevalence ज़्यादा होती है as compared to males, and especially urban areas में ज़्यादा prevalence होती है, and again the model industry, film industry, वहाँ पे इनकी prevalence ज़्यादा रहती है. Clear? This is anorexia nervosa. Other one is anorexia, bulimia nervosa. Those are two eating disorders generally you seen in the exam. Which disorder is associated with flashbacks of traumatic events? So flashbacks आपको कब आते हैं traumatic events के? Can you make how to analyze answers? हाँ, I'll make it the video. और see दीपक, मैंने already बना रखा है video where I have I think इस title का नाम, maybe I think video का नाम है how to analyze your preparation level. या फिर it is there is one more video, how to solve MCQs in less time, right? So you will go to the playlist section or the video section, you will see there are some videos titled as how to solve MCQs in less time. So there I have told you the technique, basically what I used and what I like asked my students to use, and it was beneficial me for it was beneficial for me obviously, and it helped my students also, right, to score 280 plus, 290 plus and all those things. So I've like mentioned that trick, how to analyze the papers, how to solve the MCQs, how you can boost up your preparation with the help of ChatGPT and all those AI tools, right? तो मैंने already उसका content बना रखा है. So this is basically PTSD. Question number 70. Then, which of the following is a somatic symptom disorder? Somatic symptom disorder, which means you will be having no physical cause for the problem, but again you are having some problem. So आपको उसको कोई physical या medical cause नहीं होगा, but again you are feeling some problem. This is somatic symptom disorder. Correct, it is conversion disorder. So you have so many types of somatoform disorders: conversion disorder, hypochondriasis, factitious disorder, malingering. There are so many, है ना. तो आपको इनको भी याद रखना है. In which disorder do individuals experience extreme distress of others? क्या होगा इसका आंसर भाई, बताइए. In which disorder do individuals experience extreme distress of the others?
काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, राइट. पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के 3 क्लस्टर्स होते हैं A B C एंड दे आर एक्चुअली वेरी कंफ्यूजिंग, है ना. कौन सा क्लस्टर में कहाँ से चीज़ें आती हैं. सो अगेन इन माई बैच वी आर गोइंग टू डील विद, अभी तक हमने इसको पढ़ा नहीं है बट वी आर गोइंग टू डील विद व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्लिनिकल साइकोलॉजी MCQs. तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 100+ MCQs हम लोग के इसी सब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जहाँ पे 30+ क्वेश्चन विल बी ऑन पर्सनालिटी डिसऑर्डर ओनली. तो आपकी वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी. 20-30 क्वेश्चन यहाँ पे इसके ऊपर रहेंगे. क्लियर. क्या होगा इसका आंसर भाई बताइए. करेक्ट, इट इज पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर. सबसे की सिम्टम होता है दैट यू विल फील लाइक योर पार्टनर्स आर नॉट एक्चुअली लॉयल टू यू, है ना. लोगों पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होगा आपको. लास्ट क्वेश्चन, विच डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स अ पर्सिस्टेंट अर्ज टू स्टील ऑब्जेक्ट्स. न्यू कंसेप्ट फॉर यू पीपल. ठीक है, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है, थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिएगा जस्ट फॉर द नॉर्मल यू कैन से जनरल नॉलेज पर्पस. हु नोस कब क्या एग्जाम में आ जाए. बताइए. करेक्ट, इट इज क्लेप्टोमेनिया. क्लियर. कंडक्ट डिसऑर्डर यू नो, बाइपोलर सुना होगा. पायरोमेनिया यू कैन से इट इज अ हैबिट ऑफ सेटिंग थिंग्स इनटू फायर, है ना, हर चीज़ को आग लगा देनी. दिस पायरोमेनिया कंडीशन, राइट. सो पीपल फील वेरी यू नो किक while igniting anything, maybe their house, their sofa set, their bedroom, anything. They like feel this happiness or kick while igniting. So this is pyromania. Pyro is like fire word, है ना, pyromania. Clear. So today we can I think stop here, and tomorrow I'll see you again with the new topic. And again if you wanna boost your MCQ preparation, and again आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो रही है MCQ को सॉल्व करने की, एज आई सेड मेनी टाइम्स कि टॉपिक्स पढ़ लिया है बट समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करने हैं. सो दैट्स वाई लाइक दैट्स व्हाट आई टेल इन माई बैचेस, हाउ यू कैन एनालाइज द MCQs, हाउ यू कैन सॉल्व द MCQs विद प्रैक्टिकली अप्लाइंग द नॉलेज. इन इस तरह के हम लोग 1500+ MCQs लेने वाले हैं. एंड अगेन देयर विल बी 350+ क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऑन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो. सो नेक्स्ट वीक से हम लोग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स ज्वाइन कर रहे हैं. इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच, यू कैन क्लिक ऑन द link, download the app, and there you will see a section of CUET PG crash course. So आप उसको open करोगे and there you will see our Vijeta batch series for psychology. You can join and start away the class. The very first class will be like today only 6:30 PM for you people. जो आज join करने के लिए पहली class अभी हो जाएगी 6:30 PM पे. So see you soon in the 6:30 class and see you soon in the next video on YouTube.